हेलो गाइस, तो आज की इस वाली वीडियो में विराट कोहली की इस वाली इमेज को कैसे स्टेप बाय स्टेप आउटलाइन क्रिएट करते हैं ये सिखाने वाला हूँ। एंड देन आप लोगों को पता होगा कि मैं इस फोटो को क्यों बना रहा हूँ, आप लोग खुद जानते हैं। एंड इस फोटो को ड्रॉ करने के लिए मैं A4 साइज स्मूथ सर्फेस पेपर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे ब्लैक एंड व्हाइट या कलर पेंसिल से करने वाला हूँ। एंड देन रेफरेंस इमेज विद ग्रिड आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो क्योंकि मैं इस फोटो को ग्रिड मेथड का यूज़ करके ड्रॉ करने वाला हूँ, तो इसीलिए फर्स्टली ग्रिड को पेज पे अप्लाई करूँगा। तो ग्रिड को पेज पे ड्रॉ करने के लिए मैं 2-2 सेंटीमीटर गैप देकर चारों साइड मार्क कर लूँगा कुछ इस तरीके से। एंड देन उस सभी मार्क्स को आपस में मिला दूंगा। ओके, तो ग्रिड को पेज पे अप्लाई कर देने के बाद अब मैं ड्राइंग को करना स्टार्ट करूंगा। तो बेसिकली जिस बॉक्स में आप लोगों को जो भी ऑब्जेक्ट दिखते रह रहे हैं उसे वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते जाना। एंड आप लोग मुझे देखते जाना कि मैं किस बॉक्स में क्या ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, वैसे आप लोग स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करते जाना।
तो फाइनली गाइस आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। आई होप लोग समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको ड्रॉ करते हैं। तो आपसे मिलते हैं इसके नेक्स्ट शेडिंग एंड कलरिंग पार्ट में। जब तक के लिए बाय बाय।